giving a presentation on orders of the CPC. What we intend to discuss today is basically, there are certain sections which are very important, and I think it's important for us also to know. And we'll have a short discussion on those sections of CrPC. And if you have any questions and queries, please feel free to ask those questions. Just a minute. Give me a minute. So before I start a discussion on the subject, I have one query, and I request all of you to use your brain and try to answer the question. Okay, in any, I mean, we are confining ourselves to this criminal proceedings. Of course, in civil proceedings, there are different processes which are being followed. Okay, so tell me one thing. Have you heard about this section 34? Common intention पढ़ा है आप लोगों ने? Audible? Yes, sir. Very much audible. So common intention आप लोगों ने पढ़ा है? Yes, sir. कौन बोल रहा है? It's very difficult to find out. Can you, Damini or अभी किसने बोला है? मतलब it's very difficult to find out ना किसने बोला है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. Sir, Prakriti. Prakriti. So Prakriti, tell me, what do you mean by the common intention? एक मेरे को मैं इसलिए पूछ रहा हूँ because today session I'll also try to talk about common intention, and common object. So what exactly you mean by common intention? Sir, common intention. So basically, when a criminal act is done by several people in furtherance of the common intention of all, each of them is liable for the act in the same manner as if it was done by him alone. ठीक है, वो सेक्शन के बारे में आप बोल रहे हैं, you're right. बट अगर मैं नॉर्मल पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉमन इंटेंशन, आपका दो लोग कॉमन इंटेंशन क्या हो सकता है? As common intention per se is defined in the CrPC. कहीं पे कॉमन इंटेंशन को डिफाइन किया है CrPC में? CrPC अगर आपने पढ़ा होगा तो क्या कॉमन इंटेंशन कहीं डिफाइंड है? बोलिए, कुछ भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं. तो मेरा क्वेश्चन है, आई मीन यू कैन आंसर इट. आई मीन इफ यू डोंट नो आंसर देन आल्सो आप बोल सकते हैं कि मुझे नहीं पता है. ठीक है, जस्ट सेइंग कि आपने पढ़ा है कॉमन इंटेंशन की? बस CrPC का तो नहीं पता है, CrPC का वही 34 वाला था. मैं CrPC की बात कर रहा हूँ. मैं कह रहा हूँ कॉमन इंटेंशन डिफाइन हुआ है कि नहीं हुआ, दैट इज माय क्वेश्चन. नो सर. Common intention as such is not defined. Okay, have you defined common object? तो आप लोग थोड़ा सा ना, मैंने बताया भी था, आप लोग थोड़ा सा पढ़ो, क्योंकि until unless you don't read all these things, ठीक है, because अभी थोड़े दिन बाद we will start the Companies Act and IBC, then it will become a very difficult for you to grasp it. तो क्या होगा कि लोग आएंगे, कोई बोलेंगे, और जैसे अभी CPC में मैं देख रहा हूँ वो होता चला जा रहा है. थोड़ा सा टाइम निकालो and then read it. That's very important. So those things you should keep in mind, and I request all of you. Last time भी मैंने बोला था
कि सेक्शन 34, सेक्शन 120B एंड 149, ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं. यू नीड टू गो थ्रू इट, ओके, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप पे एक तरीके से liabilities लेके आते हैं, you know, and these liabilities nature are quite different from other, because here you will not be committing the direct crime, but you will be part of the whole syndicate who gets involved into the commissioning of any crime. ठीक है, तो आपके ऊपर क्या liability आती है, constructive liability आ जाती है, या उसका नेचर क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो अगर आप देखोगे ना, so why I'm talking about all these things, if you go through this FIR of any FIR, मैं कह रहा हूँ कि कोई भी FIR आप ले लो, ठीक है, FIR तो समझ में आ रहा है ना, कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जो भी शुरू होता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में FIR से शुरू होगा, ठीक है. So go through any FIR, it will be very difficult for you to find out any FIR जहाँ पे इन sections का use ना हुआ हो. Either it's 34 or 159 or 120B. ये कहीं ना कहीं मैंने जितने देखे हैं, कहीं ना कहीं सब में वो यूज होते हैं, ठीक है. So it's very important for you also to know exactly what is the difference between, you know, these sections, ठीक है. और 34 is important in a sense that common intention बड़ा important टॉपिक होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि भाई इंटेंशन कैसे कॉमन हो गया, एंड देन वी लुक फॉर एविडेंसेस. बट एट द सेम टाइम सेक्शन 120 टॉक्स अबाउट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. क्या होता है, कॉन्स्पिरेसी हमेशा ना बंद कमरों में होती है, क्लोज डोर्स, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गिव एविडेंसेस ऑन दोज एस्पेक्ट्स, ठीक है. सो 120B, 34 एंड 149 थोड़ा सा आप लोग पढ़ो. 120B के साथ में 120A भी आप देख लोगे, तो 120B में इट टॉक्स अबाउट द पनिशमेंट एज सच, एंड देन we'll go into details, ठीक है. So all of you please go through this because it's sort of a homework for you. अभी मैं थोड़ा सा ना दो sections इसलिए बता रहा हूँ, and these are sections are important because we are not going to all those sections which are merely you know, they are written but their usage is I'll not say questionable, but their usage is you will not find commonly used in the litigation. So one important section is 311 and another important section is 91. अगर 91 और 311 दो important section होते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के, और बहुत जरूरी होता है इन लोगों के बारे में क्लियरिटी होनी चाहिए कि 91 क्या कहता है, 311 क्या कहता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड. क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क योरसेल्फ, ओके, इन सेक्शंस का यूटिलिटी क्या है फॉर दिस पर्पस. बिकॉज अगर आप देखोगे ना कोई कोर्ट में कोई केस होता है, सो व्हाट इज आवर पर्पस डिपेंडिंग ऑन द विच साइड वी आर अपियरिंग, ओके, we generally put forth our arguments supported by the evidences. अभी समझ लो there is a scenario, there is a case where somebody is being murdered and we are appearing as a private counsel on the behalf of a prosecution, ठीक है. प्रोसिक्यूशन में आप ये जानते हैं प्राइवेट काउंसिल भी इंगेज किया जा सकता है, वरना स्टेट लड़ती है. स्टेट के जो गवर्नमेंट काउंसिल्स होते हैं वो लड़ते हैं. सो अगर आप समझ लो देयर इज वन सिनेरियो दैट वी आर फाइटिंग अ केस, ओके, एंड वी आर फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन साइड, then we'll look for those evidences which let's say police has collected, and on those basis of those evidences what we'll try to do, we'll try to prove those evidences in the court of law. First it has to be admitted and then it has to be proved. उसके बाद में उनका कन्विक्शन ऑन बेसिस पे होता है. अब अगर हम डिफेंस साइड से आएंगे तो और फोकस शुड बी, यू नो, these are there are documents which are being put forward by the prosecution side. We will try to contradict those evidences. We'll try to question the veracities of those statements and evidences. And then we'll, in case if required, we'll also put forth our evidences from the defense side. So एक तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरी कहानी ना जो कहीं पे भी होती है, be it
civil litigations or the criminal litigation, or let's say arbitration matter also. Arbitration में भी क्या करते हैं हम, तो बात करते हैं ना evidences को लेके आते हैं उसी के बेस पे, क्योंकि mere statement will not fetch you the results. Your statements must be backed by the some proof which may be in the form of evidence. तो evidence आने पे भी क्वेश्चन नहीं होता है, एविडेंस आप लेके आए, बट वो एविडेंस एडमिसिबल भी होना चाहिए, ठीक है। सो वो दो क्वेश्चंस आएंगे। तो एक तरीके से सब में अगर हम बोलते हैं तो फॉर एवरी statement that we make in the court of law, that has to be backed by the certain evidences. Admissibility, relevancy is of course a factor. So अगर आप देखोगे ना, पूरी कहानी इस बात पर डिपेंड करती है कि क्या डॉक्यूमेंट लेके आए और क्या एविडेंस है। डॉक्यूमेंट हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द सिविल लिटिगेशन। क्रिमिनल लिटिगेशंस में भी उनका सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, ठीक है। सो व्हेन नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट importance of a document and then how to procure those documents. It's very important, and these things can be used in the civil litigations as well. क्योंकि सिविल लिटिगेशन में भी आप देखते हो ना, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये चीजें हुई, या लॉसेस कैसे मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, या आर्बिट्रेशन में भी कहीं जाते हैं तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेनी टाइम इट में हैपन कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट है और आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं दूसरी पार्टी को, ठीक है, और या एक्सेस पूरा नहीं मिल रहा है। So in that case, there are certain provisions in the CrPC also where we can call those documents. When we are talking about those documents, what I mean by those documents, I am saying that, you know, in any criminal trial, before the inquiry and trial, there is a process of investigation. So during the course of investigation, IO, the investigating officer, collects all those documents in the forms of evidences. ठीक है, मान लो बैंक का एक फ्रॉड हो गया, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रॉड। तो फ्रॉड में ना फर्जी बीआर लगा देगा। बीआर समझते हो, बोर्ड रिजोल्यूशन? समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो बताओगे, नहीं तो फिर मैं आगे चलता रहूंगा। बीआर समझ में आता? बीआर, व्हाट डू यू मीन बाय बीआर? No, sir, I don't. We get No, it. so So can you BR please explain? अच्छा, सो बीआर, मिसबा बताइए भाई, आप ही बताइए लोग को बीआर क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीआर, and especially those who are interested in the, you know, the commercial side of litigation or the, you know, company secretary जैसा काम या corporate work में BR has a very important role to play. Misbah, please explain. Yes, sir. Even in the last presentation, when Mr. Topo Sharon has explained the concept of a BR, board resolution, where there is a formal authorization by the shareholders or a board of a director to represent a body corporate or any body, any like trust, LLP, partnership firm or a company. All are need to be represented through a authorized representative, and the authorized representative got its power through board resolution. That has been also explained by Mr. Sharon in his presentation. When we are doing on an order, the appearance through pleader or authorized agent, that is a BR. When we file wakalatnama, and if it is a body corporate or a partnership firm or a trust, then the court will ask where is the authorization, and we got authorization from board resolution, that is BR. And along with wakalatnama, we always file board resolution. That's all. Yes, yes, thank you, Misbah. So it's very important for us to understand the difference between an individual and the body corporate or society. Okay, so in that case, we need an authorization, because it's not an individual person who will authorize you by just signing the wakalatnama. And many times, power of attorney is also issued in the name of those individuals. For example, a Reliance company is there. So Reliance company, it's not a chairman or the managing director, Mukesh Ambani, is going to sign every document. Okay, so what will happen that, you know, by a board resolution, certain individuals will be given up some sort of a power in forms of power of attorney, where individuals can appear, plead, and sign the documents. So, and BR plays a very important role, and we have seen
in some of our cases that our parties were in adverse position because they were not aware of those provisions. So sometimes it may happen in a company, there are 3 directors, and one director is the one who is executing all those decisions which have been taken up by the board of management. Now, if in the board of management meeting, if there is no authorization for individual to take such decision, the decision of the individual director becomes void if in case of any dispute. क्या होता है अगर आप समझ लो 3 लोग डायरेक्टर हो और कंपनी में बैठ के डिसीजन ले रहे हो, दिस इज बिट डिफरेंट फ्रॉम द CrPC, बट लेट मी एक्सप्लेन टू यू एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. 3-4 लोग बैठ के डिसीजन ले रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट योर डॉक्यूमेंट शुड बी इंटैक्ट एंड इट शुड बी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड. देखिए, अगर डिस्प्यूट अगर नहीं है तब तक तो सब कुछ बहुत अच्छा है. मैं सच बताऊं भाई, 4 लोग हो, घर की फैमिली के तरीके से चला रहे हो, मिनट्स ना लिखो, जो भी ना लिखो, कुछ भी मत लिखो. लेकिन अगर डिस्प्यूट हो गया ना, सो आपके पास में आपका बैकअप नहीं रहेगा until so BR is some sort of, I'd say, backup in case of a dispute, and it's very important. जैसे मान लीजिए 4 डायरेक्टर हैं, इसमें 2 डायरेक्टर सिग्नेटरी हैं. 2 डायरेक्टर ने बोला कि डिसीजन ले लिया कि वी नीड टू बाय अ सर्टेन पीस ऑफ लैंड. ओके, सिग्नेटरी वो थे, उन्होंने पैसा ट्रांसफर कर दिया थर्ड पार्टी को, बट दिस डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट. मान लो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में भी डिसाइड कर लिया, मिनट्स में भी आ गया, बट क्या उसके लिए BR कोई था, प्रॉपर मिनट्स बने? ठीक है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. दैट्स व्हाई यू हैव सीन in many companies, established companies, there is an important role of company secretary and the compliance officer. And many time a dispute, especially operation and management के disputes में कहीं ना कहीं BR का बड़ा important role हो जाता है. And this happens because let's be very honest to ourselves that in India 90% of our commercial disputes, okay, are being initiated and supported and perpetuated by the professionals. CA, CS और lawyers का बड़ा important role है. ठीक है, that's what we discuss, because many times either we don't have a capability, or either we don't want to guide them, or we feel that the whole compliance process is very cumbersome. जब होगा तो देख लेंगे, that thing. So it's very important. The college में भी हो तो it's very important for you to understand something, that you need to follow the process, and by following the process you will minimize the litigation, not only for a company but at the individual level also. So this is all about BR. We'll discuss in detail when Rishabh will be giving a presentation on certain topics related to companies law. Okay, so that's why I said documents are very important. And then many times we have seen, I have already discussed what are the stages of a criminal proceedings as such, or the the stages of the whole process, starting from the commission of the crime till the acquittal or the conviction of the accused. So one stage will be after this FIR is lodged, we will have the investigation. Investigation is carried out by the investigating officer. During course of investigation, officers collects lot of things. It may be in form of evidences. For example, we have talked about forensic evidences. It will be in the form of the statements from the witnesses, a statement from the accused, a statement from the victim as well, if victim is living. Okay, for example, in 307 or 376 case or 323 case, so the statement of victim also gets recorded. So these are the statements that comes from a different source. We have talked about a forensic evidence in forms of, blood, swab, and other things. Then important is the documentary evidence. There are number of crimes, especially in the area of financial crimes or the check bounce and all. So we have a lot of documentary evidences which comes into picture. So these things get collected and they become the part of a charge sheet. And I'm talking about charge sheet. I think charge sheet is not a proper word. It has to be police report, but normally we use the word charge sheet. Charge sheet is not a proper or legal word which has been used in the CrPC. It is basically the police report which is being submitted to the court, and court take cognizance. And it's very important for you to understand during the, I have already
discuss with you about difference between the magistrate court and the session court. In session court also, the session court does not have a direct power to take a cognizance, okay, of any matter. So charge sheet will be submitted or the police report will be submitted to the magistrate court. The magistrate will take a cognizance and commit this case to, committing means transferring the case to the session if it's involved a session trial. For example, if the sections which has been used in the FIR will lead to the conviction of more than 7 years or above. That is one point that you should always keep in mind. Second important aspect, I'd say, when we see that, you know, once this police report is filed, what we say charge sheet, there comes a stage of inquiry. So now section 91, I'd say if you have a their act, just go through section 91. Section 91 is very important. Many times what we see, there are two stages. One is, imagine a situation where investigating officer is very honest. He's a damn honest person. He does investigation properly, okay, and he collects a lot of evidences, okay, and he properly presents this case to the court. There may be a second situation where it is difficult for the IU to get those documents, okay. He has no access, he has no idea who will have the custody of those documents. Third situation is IU, imagine a situation IU is corrupt, okay. So what he'll do, he will try to, you know, manipulate the whole investigation process. The investigation process gets sabotaged by the opposite party. So these are three situations. Now situation number 2 I'm talking about is 91 gives a power to not only the court. It's very important for you to understand, because CrPC generally talks about power of a court, but there are certain provisions which gives power to the police officers as well. And remember one thing, for police, there's a certain act, 1861 Police Act, which is also very important. And these acts have been modified in certain courts, amended, but state-wise, we have a police act, because police per se is a state subject. Are you aware of this, you know, nomenclature? State subject, concurrent subject, union list, ये सब समझ में आता है ना? Union list. Hello? Yes, sir. The union list, concurrent list, state list. So police जो होता है ना, state subject होता है, ठीक है? Law and order, basically law and order we say, so law and order में police आ सकता है, but there are certain overlaps as well. Okay, so we are not going into detail, but I'm saying that 1861 Act is also very important, Police Act. उसमें काफी guide करते हैं. So no, 91 is very important because 91 gives a power to whom? It gives a power to a police officer as well as it's going to give the power to the court also. So what does it mean? कोई बोल सकता है कि अगर मैं बोल रहा हूँ, it gives a power to the police officer, it also gives the power to the court. What I'm trying to convey. कुछ भी बोलिए, बोल सकते हो यार, मोनोलॉग नहीं होना चाहिए. When I'm saying कि it gives a power to the police officer, it gives a power to the court. So, the police officer has the power to approach the court to ask for the process of to compel the appearance, compel the procuration of any document or thing. So in that way, so it gives the power to the police officer and the court to order for a document which is in possession of a person, which is required for an investigation. Anyone else? Sir, बोलिए. Sir, it also gives power to the court in the same manner, while the investigating officer authority has a power to compel for production of a document during investigation. In the same manner, the court has a power to produce the document to issue a direction during the inquiry of a case. Or right. During inquiry plus during trial also. Inquiry plus trial, sir. It's very important because human एक तो ये पावर देता है, ठीक है. सो अगर पुलिस ऑफिसर अगर चाहेगा
कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन उसको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. He can always issue an order. Okay, when an authority issues something, we say it's a basically sort of an order. Okay, so उसको कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, he can simply issue a notice. Okay, will not say summon. Summon की बात नहीं करेंगे. Summon generally court issues करता है. ठीक है, so that thing you should keep in mind. And for a student, I think that's very important for you to understand the concept of investigation, inquiry and trial. अभी भी मुझे लगता है कि क्लियरिटी नहीं है तुम लोगों में. तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेज होते हैं. डेफिनेशन क्लॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ लो. नहीं समझ में आएगा तो मैं बताता हूँ. देखिए, इन्वेस्टिगेशन पहला स्टेज होता है. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करती है. कोर्ट डू नॉट हैव एनी रोल पर से. ओके, ठीक है, वो डायरेक्ट कर सकती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, बट कोर्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी. दैट इज वन थिंग. इन्वेस्टिगेशन के बाद में आता है इंक्वायरी का स्टेज. अब इंक्वायरी की प्रॉब्लम ये है कि इन इंडिया एंड मेनी केसेस इंक्वायरी इज नॉट वेरी विजिबल. ओके, देयर आर सर्टेन केसेस जहाँ पे इंक्वायरी विजिबल होती है. चेक बाउंस हुआ, ये हुआ. ठीक है, सो दैट you can always see. So inquiry stage comes in between when the police report or charge sheet is filed till the charges are framed. चार्ज फ्रेम होने के बाद में जो कुछ होता है वो ट्रायल होता है. ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो ये दिमाग में रखो. अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस सेक्शन. इट सेज व्हेनेवर एनी कोर्ट, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर एनी कोर्ट और एनी ऑफिसर इन चार्ज और of a police station considers that the production of any document or other thing is necessary or desirable for the purpose of investigation. तो वर्ड यूज किया इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, तो पुलिस ऑफिसर के लिए आगे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी कोर्ट के लिए हो गया. गिव मी अ मिनट प्लीज. Okay, so another word is used in inquiry, trial or other proceedings under this code. ठीक है, अदर प्रोसीडिंग्स की भी बात किया. कोई अदर प्रोसीडिंग चल सकती है. ठीक है, बिफोर अ कोर्ट ऑफिसर, बिफोर अ कोर्ट और ऑफिसर सच कोर्ट में इशू अ समन. तो कोर्ट क्या इशू कर सकते हैं? समन. और सच ऑफिसर अ रिटन ऑर्डर. मेरी बात समझो, ये रीडिंग बिटवीन द लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है. कल को कोई पूछ लेगा कि भैया ऑफिसर ने समन इशू किया, आप तो ऐसा बोल दोगे ना. तो समन नहीं इशू कर सकता है, वो ऑर्डर इशू करेगा. ठीक है, नॉमेनक्लेचर का फर्क है. To the person in whose possession or power such documents or things is believed to be. मतलब इसके लिए कोई रिजिड प्रूफ नहीं चाहिए. अगर कोर्ट को लगता है या ऑफिसर को लगता है कि इसके पास होना चाहिए, तो वो समन इशू करेगा या ऑर्डर इशू करेगा. Requesting him to attend and produce it or produce it at the time and place stated in the summons or order. Any person required under this section merely to produce a document. तो इसमें क्या होता है कि आपको प्रोड्यूस करना होता है डॉक्यूमेंट. जरूरी नहीं कि आपको ही जाना पड़े. वो डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस कर दिया तो आपका काम खत्म हो गया. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 123 124 पढ़ लेना. ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से काफी लिंक्ड है. ठीक है, बेसिकली स्टेट का जो करस्पॉन्डेंस है. और दूसरा इन्होंने एग्जाम्पशन दिया है लेटर, पोस्ट कार्ड एंड टेलीग्राम का, क्योंकि उसके लिए सेपरेट सेक्शन है. तो ये बड़ा बहुत बार ऐसा होता है ना, सिविल लिटिगेशन एंड क्रिमिनल लिटिगेशन में भी आप देखेंगे, आपको लगता है कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो उनके पास में है और मुझे दिया नहीं जा रहा है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल मूव एन एप्लीकेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट from the larger perspective. During the trial stage, if I see that there are certain documents which is in the possession of opposite party, I can move an application under section 91 and request the court to issue a summon, and things has to be decided by the court. But we need to prove it. What is the important? It's very important. ऐसा नहीं मैकेनिकल नहीं प्रोसेस है. It's more like a 319. ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं कि आपने एप्लीकेशन दिया और एप्लीकेशन अप्रूव हुआ. We need to prove it. What kind of documents? ऐसे वेग में नहीं बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि अगर मुझे प्रूव करना है ना डेट ऑफ बर्थ इसका कुछ गड़बड़ है, तो उसने अपना बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट कर ली, तो मैं एप्लीकेशन मूव कर सकता हूँ. मैं बोलता हूँ इसका बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय द हॉस्पिटल और द लोकल बॉडीज की चाहिए मुझे. देन वी हैव टू राइट इन द एप्लीकेशन कि मुझे जरूरत क्यों है.
and then it is to be decided by the court. I am talking about the trial stage. इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो कभी भी लिख सकता है किसी भी चीज के लिए, लेकिन नॉट ड्यूरिंग द ट्रायल। एक बार आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो मेरा ये तुम लोगों के लिए होमवर्क है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कल या परसों हम लोग लंबा थोड़ा सा करेंगे, सो इट विल बी सेक्शन 34, 120 बी, सेक्शन 149, 91, 311, 319 एंड 315। आप लोग पढ़ के आओ, और सैटरडे को विल हैव अ लॉन्ग सेशन, ठीक है। तो कल और परसों हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे CPC, and we can have one section on the Companies Act. So you have another 3-4 days. I'll request all of you to please go through it, and if you have any questions and query, you can always give me a call. Okay? Hello. अच्छा, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया एक जो मैंने बोला ना कि अगर चार्जशीट हम लोग भी बोलते हैं, लेकिन चार्जशीट नहीं तो पुलिस रिपोर्ट होता है। ये जो क्रिमिनल केस में कहीं पे भी होगा वो मजिस्ट्रेट के कोर्ट में सबमिट होता है, until unless there is a special provisions. For example, SC/ST Atrocities Act और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर स्पेशल कोर्ट्स हैं, CBI कोर्ट्स, तो डायरेक्टली वो चार्जशीट ना सबमिट हो सकती है सेशन कोर्ट में भी, जहाँ पे ASJ जो होते हैं उनके कोर्ट में जा सकती है, लेकिन वो सब एक्सेप्शंस हैं। तो आप ये सोच लेना, मैं ये चाहता हूँ कि व्हेन यू रीड द सेक्शंस, just think what is the importance of these sections, how these sections are useful in your litigation, और litigation तो ऐसा नहीं सोचो, नॉर्मल नॉलेज और चीज़ों में तो कैसे 319 बहुत इंपॉर्टेंट है, 311 is also very important. We'll also talk about 313 and 315 also. So these are the important sections. So just go through it and read it, and we'll discuss in detail. And कल आप ऋषभ प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना CPC पे? ऋषभ, हाँ भाई ऋषभ, I'll be presenting tomorrow, sir. हाँ ठीक है। तो आप इनको जितनी जल्दी PPT आपकी हो जाए रात में, जो भी जैसे भी है, या सुबह सर्कुलेट कर देना। एंड प्लीज एवरीवन, अब थोड़ा पढ़ के आओ यार, तो अगर नहीं करोगे तो मैं ही एक ऐसा बोलता रहूंगा, या आपको प्रेजेंट करने आता वही बोलता रहता है। आप क्वेश्चन पूछो तभी सही रहेगा, वरना फिर वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू।